everyone. Today we are going to discuss what is the formula for writing uh, the small surface element, that is the ds. For this, firstly we'll study what is the projection and how to calculate it. So firstly we discuss the projection of the straight line. Say we are given the straight line AB and we are to calculate its projection on the line L. So how we will calculate its projection? We draw a perpendicular from the point B to this line L. So AM will be its projection on the line L. So let us suppose that this angle is theta here, and at any point the unit vector k cap points in this direction, and the unit normal vector, that is normal to the line AB, is in this direction. Say this is the n vector. So this will be perpendicular to here, and this is the normal, this surface. So this will be of course 90 degree. So we can calculate that this angle will be equals to theta here. So AM is the projection of AB. So from this diagram, we can easily calculate that AM will be equals to AB cos theta. Now, if we consider the straight line AB as like this, and we are to calculate its projection on this line L, which is at some distance from the line AB. So how we will calculate this distance? For this, we again draw the perpendicular from the point A and B to this straight line L. Say the perpendiculars are MN here, AM and BN here. So MN is called the projection of AB on the line L. So this was the projection of the straight line. Now we are considering the projection of the surface element. For this we consider XY Z axis, and say we take a surface here, and its projection will be, of course, if we consider its projection in XY plane, then this will be its projection by drawing the perpendicular lines. If we consider a small surface element over this surface, say ds here, then its projection will be drawn over the xy plane by drawing the perpendicular distance to the xy plane. So it will look like this. So of course this is surface element, so it will be dx dy. Length and breadth, this area will be dx dy. And suppose that the unit vector k cap is in this direction, and the unit normal vector n cap points in this direction. And suppose that the angle between them is
gamma here. So by using this formula, what we get, am is the projection here, and here the projection is dx dy. So dx dy will be equals to ab. Now what is ab here? AB is the line whose projection is to be calculated. So here the surface element ds whose projection is to be calculated into cos theta. Theta is the angle between n and k cap. So it will be cos of gamma here. So from here we can say ds is equals to dx dy upon cos gamma. Now next we are to calculate the value of the cos gamma in terms of n cap and k cap. So for this we consider n dot k cap, dot product of n with the k. So this will be equals to magnitude of both factors into the cos of angle between them. So since both are the unit vectors, so the magnitude will be 1. So we get cos gamma here. So what is the value for cos gamma? That is n cap dot k cap. So this will be equals to dx dy upon n vector dot with k vector. So from here we can say ds will be equals to dx dy upon n vector dot with k vector. So this is the formula for the surface element ds by using the projections. Now next we consider the proof of the Gauss divergence theorem. So, firstly I will write its statement. Gauss divergence theorem. Its statement is, if V is the volume bounded by a closed surface S and F is a vector point function with continuous derivative in V, then the surface integral f dot n ds is equals to the volume integral of divergence of f dv, where n cap is the outward drawn unit normal vector to the surface S. And of course there is a second statement for it, that is the normal surface integral of a continuously differentiable vector point function f vector over a closed surface S enclosing a volume V is equal to the volume integral of the divergence of f takes over the volume capital V. So these are the two statements for the Gauss divergence theorem. Now we will prove this theorem. See its proof. So let us suppose that the f vector is equals to, f is the vector point function, and f vector is equals to f1 I cap plus f2 j cap plus f3 k cap in the component form. Call this as equation number 1, where f1, f2, f3
and their derivatives at any point in V are continuous. Now we consider divergence of F vector. See here, we are to calculate divergence of F, then volume integral dV. This should be equals to F dot n ds surface integral. So firstly we will calculate divergence of F. Now what is divergence of F? That is dot product of del with F. So it will be equals to I cap curl by curl x plus j cap curl by curl y plus k cap curl by curl z into f1 I cap plus f2 j plus f3 k cap. Now after solving we get divergence of f is equals to curl f1 by curl x plus curl f2 by curl y plus curl f3 upon curl z. All this as equation number 2. Now in this theorem we have to prove the surface integral of f डॉट n. यहाँ पे हम f की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कंपोनेंट वाइज, दैट इज f1 i कैप प्लस f2 j कैप प्लस f3 k कैप डॉट n ds must be equals to the volume integral divergence ऑफ f की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे. इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में हमने कैलकुलेट की है. दिस इज कर्ल f1 बाई कर्ल x प्लस कर्ल f2 बाई कर्ल y प्लस कर्ल f3 अपॉन कर्ल z इंटू वॉल्यूम एलिमेंट की वैल्यू है dx dy dz. Call this as equation number 3 which we are to prove here. Now next we consider a surface here. For this we consider x-axis, y-axis and z-axis here. Suppose this is x-axis, this is y-axis and this is z-axis, and we consider a surface here. So this is surface. Basically I have considered the sphere here. So ये 3 dimensional surface है हमारे पास. तो यहाँ पे इसे 3D रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसे ऐसे डॉटेड भी शो कर देते हैं यहाँ पे, ताकि पता चले कि ये 3 dimensions में हमने कंसीडर किया है. So this surface is S here, and we consider its projection in the xy plane. So its projection in the xy plane will be like this. So the area enclosed is represented by R here. Now let us suppose that S be a closed surface such that it is possible to choose a rectangular Cartesian system such that any line parallel to any coordinate axis cuts S in at most 2 points. तो यहाँ पे देखो कि अगर हमने जो ये सरफेस एस कंसीडर किया है, इसमें अगर हम कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, से मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे कोई भी लाइन ड्रॉ की, तो ये होगी इस तरीके की लाइन.
वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने पॉइंट्स पे कट कर सकती है? 2 पॉइंट्स के ऊपर कट कर सकती है। कैसे? देखो, अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करती हूँ एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो ये लाइन हो सकती है, मतलब किसी भी पॉइंट पे कट ना करे इस सरफेस को, या फिर हो सकता है कि जस्ट एक पॉइंट पे कट करे, या फिर थर्ड पॉसिबिलिटी आती है कि 2 पॉइंट्स के ऊपर कट करे। इससे ज़्यादा तो किसी पॉइंट के ऊपर कट नहीं कर सकती। तो यही हमने यहाँ पे मेंशन किया है। Now let us suppose that R be the orthogonal projection of the surface S on the xy plane। तो हमने R जो है वो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन कंसीडर की है सरफेस S की, कौन से प्लेन में? xy प्लेन में। A line through a point xy 0 of R meets the boundary of S in 2 points। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं आर में, से मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, ऑफ कोर्स ये एक्स वाई प्लेन में है, तो इसके हमारे पास इस पॉइंट के हमने कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो क्या होंगे? एक्स वाई 0 होंगे। अगर मैं यहाँ से कोई लाइन ड्रॉ करती हूँ इस सरफेस के ऊपर, तो डेफिनेटली इस सरफेस को ये जो लाइन है वो 2 पॉइंट्स के ऊपर कट करके जाएगी, ठीक है? और वो दोनों पॉइंट्स जो हैं, ये वाले दोनों पॉइंट्स, इसमें x और y की वैल्यू सेम रहेगी, एक्स वाई, ठीक है? वेरिएशन कहाँ पे आई है? सिर्फ z वाले कोऑर्डिनेट में आई है। सो मान लो वो दोनों पॉइंट्स हमारे पास हैं z1 एंड z2। अब क्योंकि मैंने ये सरफेस S जो है वो 3 डिमेंशन में कंसीडर किया था, सफियर है बेसिकली यहाँ पे, तो इसमें इक्वेशन क्या है इसके? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू, से रेडियस इज a हियर, तो यहाँ से हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है? तो यानी कि z की वैल्यू हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स वाई आ गई। तो यहाँ पे इसे हम लिखेंगे इट इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और z2 हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे z की 2 वैल्यूज आएंगी, और यहाँ पे सेकेंड वाली वैल्यू है f2 ऑफ एक्स वाई। वेयर डायग्राम से हम देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे इन्हें मार्क करूँ, ये पॉइंट z1 है, ये z2 है, तो z2 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू z1 है, ठीक है? नाउ वी कंसीडर द वॉल्यूम इंटेग्रल। वॉल्यूम इंटेग्रल में देखो हमने ये वैल्यूज सॉल्व करनी है, तो हम क्या करेंगे? किसी एक वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कर्ल f3 बाई कर्ल z इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड को सॉल्व कर लेंगे। वही वैल्यू कर्ल f2 बाई कर्ल y की सिमिलरली डाल के लिख देंगे, एंड सिमिलरली फॉर f1, फिर तीनों को सम अप कर देंगे। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं वैल्यू कर्ल f3 अपॉन कर्ल z इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी? इसकी वैल्यू हमारे पास, वॉल्यूम इंटीग्रल हम फाइंड कर रहे हैं, तो पहले हम इसकी इंटीग्रेशन करवा लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो z की लिमिट्स हैं वो इन टर्म्स ऑफ x और y हैं। तो हम पहले सॉल्व करवाएंगे कर्ल f3 बाई कर्ल z इंटू डी जेड को इंटू डी एक्स डी वाई, जिसमें हमारे पास z1 की वैल्यू है f1 ऑफ एक्स वाई, और z2 की वैल्यू है f2 ऑफ एक्स वाई। So after integrating, we get the double integral region are f3 xyz, it is a function of xyz, and the limits are from z1, that is f1 xy, to z2, that are f2 xy into dx dy. So after substituting the limits in place of z variable, so we have, this will be equals to double integral into f3 of xy f2 minus f3 of xy f1 dx dy. Call this as equation number 4. So this is the value for the triple integral curl f3 upon curl z dx dy
dz. So we have calculated this value. Now next, let us denote the portion of surface S corresponding to z is equals to f1 of xy and z is equals to f2 of xy by s1 and s2 respectively. तो इस डायग्राम में जो z1 का हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आई है, दैट इज z इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं s1 के साथ और इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं s2 के साथ. नाउ फॉर द अपर पोर्शन क्या है इसमें s2 है. फॉर द अपर पोर्शन s2 let n2 cap be the unit outward drawn normal vector making an angle say gamma 2 with k cap as shown. So here n2 जो है, n2 वो हमने कंसीडर करना है यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर. हमने क्या किया यहाँ पे, एक हमने सरफेस एलिमेंट लेना है, मान लो मैंने ये ले लिया, इसकी प्रोजेक्शन इन एक्स वाई प्लेन में हम कंसीडर करेंगे. ये इसकी प्रोजेक्शन है इन एक्स वाई प्लेन. तो इसमें जो हमारे पास सेम वे से ये अपर पोर्शन में है, सेम वे से ये लोअर पोर्शन में आएगा. इसमें हम इसको स्मॉल, हमारे पास ये सरफेस एलिमेंट है तो ds1 से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि ये लोअर पोर्शन में है, और इसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ds2 के साथ. ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं ds2 की. तो इसमें k कैप की वैल्यू जो है वो ये है, और जो इस सरफेस के यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर है n कैप, वो हमने ये कंसीडर किया, और दोनों में एंगल कितना है, दैट इज गामा 2. ठीक है, ऑब्वियसली आपको यहाँ से पता चल रहा है कि जो गामा 2 है उसकी वैल्यू जो है वो एक्यूट एंगल है वो. देन so here gamma 2 is an acute angle. So if ds2 is projected on xy plane, कि अगर हम ds2 की प्रोजेक्शन कंसिडर करते हैं xy प्लेन में, then this projection क्या आएगी हमारे पास, dy dx आएगी ऑफ ds2 की, इज गिवन बाय, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होएगी, dy dx इज इक्वल्स टू cos gamma 2, एंगल कितना है इसमें, cos gamma 2 into ds2. Now by using the formula for projections we get this value is equals to k cap dot n2 cap into ds2. So call this as equation number 5. As we know, k cap dot n2 cap is equals to their magnitudes into cos of gamma 2. So cos of gamma 2 will be equals to k cap dot n2 cap, as the dot product is commutative in nature. Similarly, if for the lower portion we consider the unit outward normal vector, see in the diagram, for the lower portion in this is the k cap here, और जो हमारा यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा, n2 कैप उसकी वैल्यू है, और इसका जो हमारे पास नेगेटिव z
एक्सिस के साथ एंगल है, ये हमने सपोज कर लिया कि ये एंगल जो है वो गामा वन है, तो ऑब्वियसली के कैप के साथ इसका एंगल कितना होएगा, दैट विल बी पाई माइनस gamma 1. That will be the obtuse angle. So we write for the lower portion S1, let n cap be the unit outward drawn normal vector making an angle gamma 1 with k cap as shown. So here if ds1 is projected on xy plane, then the projection dy dx of ds1 is given by dy dx is equals to cos of angle, इसमें कितना था, pi minus gamma 1 into ds1. So it will be minus of cos gamma 1 into ds1. So by using the formula for projections, we are having dy dx is equals to minus k cap into n1 dot with n1 to ds1. So call this as equation number 6. Now from the equation 5 and equation 6, we have calculated the values for dy dx for the two surfaces, different surfaces for f1 as well as f2. सो f2 के लिए जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की है वो इक्वेशन नंबर 5 है, तो f1 के लिए इक्वेशन नंबर 6 में वैल्यू कैलकुलेट की है, ये दोनों वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 4 में सब्स्टिट्यूट करेंगे. नाउ फ्रॉम 5 and 6 put values in equation number 4. Then we have triple integral curl f3 upon curl z dx dy dz is equals to the surface integral f3 of xy f2 into dy dx minus the surface integral f3 xy f1 of dy dx. Now after substituting the values, this is the value for f3 और dy dx की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 5 से हमारे पास आएगी k डॉट n टू इंटू डी एस टू, ये वाली वैल्यू यहाँ पे सब्सिट्यूट कर देते हैं, k डॉट n टू इंटू डी एस टू प्लस सिमिलरली सेकेंड वाली वैल्यू जो है वो सिक्स इक्वेशन से सब्सिट्यूट करनी है, माइनस माइनस विल बी पॉजिटिव प्लस इस वन एफ थ्री k dot n1 ds1. Now see this equation, this is the surface S2 and this is surface S1. Since the function this value is same in both cases, this is the value for the f3 function into the dot product of k dot unit vectors for the surface S2 and this is the value for the S1 surface. दोनों को हम सम अप कर रहे हैं, S1 सरफेस की जो वैल्यू है और S2 सरफेस की वैल्यूज है वो दोनों को हम फाइंड आउट करके प्लस करवा रहे हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, पूरे के पूरे सरफेस का आंसर आ जाएगा. दैट विल बी इक्वल्स टू द डबल इंटीग्रल सरफेस f3 k कैप डॉट विद इन दोनों की जो वैल्यू है इनसे हमारे पास एक कॉमन वैल्यू आएगी n वेक्टर, n dot ds vector. Okay. So from the last equation we are having triple integral curl f3 upon curl z dx dy dz is equals to the surface integral f3 k dot n
ds. Call this as equation number 7. Similarly, triple integral for curl f2 upon curl y dx dy dz will be equals to the surface integral f2 j dot n ds as equation number 9. Similarly, for triple integral curl f1 by curl x dx dy dz is equals to the surface integral f1 I dot n into ds. All this is equation number 9. Now add the equation 7, 8 and 9. Then we have volume integral curl f1 by curl x plus curl f2 upon curl y plus curl f3 upon curl z dx dy dz is equals to the surface integral of f1 I cap plus f2 j cap plus f3 k cap into n vector dot with n vector to ds. So this was the equation that we are to prove. See this thing, this is equation number 3 which I have written here that we have to prove. So this is proved here. So hence Gauss divergence theorem is proved here. Thank you. Thank you very much.